Welcome back to our lecture series of Advanced Linear Algebra. In this lecture, we will study orthogonal projections and the spectral theorem. Before going to the main topic, let me tell you कि हम इस lecture में किस तरीके के linear operator को discuss करेंगे. Suppose we have a linear operator T that is defined from a linear product space V to the space V. Now we are going to talk so those linear operators which has this form, that is T is equal to lambda 1 T1 plus lambda 2 T2 plus and so on, we have lambda k Tk, and where these all lambda 1 lambda 2 and so on lambda k are distinct eigen values of T, and T1, T2 and so on Tk are orthogonal projections. ओके तो सबसे पहले हम ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन की डेफिनेशन के बारे में समझेंगे. सिंस एवरी ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन इज अ प्रोजेक्शन इटसेल्फ, तो सबसे पहले हम प्रोजेक्शन के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद हम ऑर्थोगोनल की डेफिनेशन पर आएंगे. ठीक है, सो लेट मी स्टार्ट दिस लेक्चर बाय द डेफिनेशन, and this definition is about the projection. Okay, so let T be a linear operator defined on an inner product space V. Okay, let W1 and W2 be two subspaces of V such that this V is the direct sum of W1 and W2, such that V is equals to W1 plus W2. Okay, we have this V in the form of direct sum of W1 and W2. Also let X belongs to V such that X is equal to X1 plus X2, where X1 is coming from W1 and X2 is coming from W2. ठीक है, if the T image of X is equal to X1 for all X, that is equals to, for all X belongs to V, then T is said to be projection of V on W1 along W2. Okay, so T is projection of V on W1 and along W2. Okay, now since this T is projection, so we can talk about the ranges. So let me talk about the range space of T. यहाँ पर हम T की बात नहीं करके हम ये बात करते हैं कि किसी भी लीनियर ऑपरेटर की रेंज हम कैसे दे सकते हैं. दैट रेंज ऑफ T में इस तरीके के एलिमेंट आएंगे, T ऑफ X वेयर दिस X इज कमिंग फ्रॉम V. ओके, अब T ऑफ X, क्योंकि X को हम X1 प्लस X2 की फॉर्म में लिख पा रहे हैं और ये इमेज हमेशा X1 की फॉर्म में आएगी, वेयर दिस X1 is coming from the W1 subspace itself. Okay, so this X1 is coming from W1, so we can say this 8 is nothing but the W1. Okay, so our range of T is nothing but W1. And what about the null space of A? We have null space of T. Okay,
So null space of T, that is capital NT, it is defined as n of t, एंड हमें पता है कि इसमें v के वो सारे एलिमेंट आने हैं जिनकी t इमेज 0 पर मैप हो रही है, एंड वी नो अगर x1 प्लस x2 फॉर्म का है, सो वी आर राइटिंग x1 प्लस x2 in v such that t of x, that will be x1 equals to 0. So we have, if we choose x1 equals to 0, then we have x2 belongs to v, such that this is happening. So I can say this x2 is the member of w2. तो हमें v में केवल x2 टाइप के मेंबर को आइडेंटिफाई करना है. So I can say this x2 is in w2, right, and that is nothing but the w2. So you can say जो हम डायरेक्ट सम आइडेंटिफाई कर रहे हैं w1 और w2 की फॉर्म में, और फिर उस v के लिए जो हमने प्रोजेक्शन डिफाइन किया है ऑन w1 अलोंग w2, सो दिस w1 इज नथिंग बट द रेंज स्पेस ऑफ t एंड w2 इज द नल स्पेस ऑफ t. नाउ इफ यू रिप्लेस w1 and w2 in the representation of v, then we have that v is equal to the range of t. In place of w1 we write range of t and the direct sum with null space of t, right? So whenever t is a projection, then v can be written in this form, range of t then direct sum with null space of t. Okay, so this is about the projection. Now let me write the definition of orthogonal projection. So we will study next definition, and this definition defines orthogonal projection. ओके, सो जब कभी भी कोई भी टी ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन है तो इसमें वो सबसे पहले प्रोजेक्शन होगा. एंड लेट मी पॉइंट आउट वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट टी इज प्रोजेक्शन if and only if the t square is equal to t. Okay, this is a result about the projection. We will use this very soon in a theorem. So orthogonal projection, so let t be let v be an inner product space, and let t defined from v to v be a projection. Now the moment we say this t is projection, then this is following the above discussion. So we say that this t is an orthogonal projection if the range space of t का orthogonal complement is equal to null space of t and the range space of t is equal to the orthogonal complement of null space of t. Okay, now in case of अगर v finite है तो उस केस में this condition implies this one, but in case of infinite we need to verify these two conditions. Okay, so let me write this observation. So in case of finite dimensional inner product space, the condition that range of t is equal to null space of t, that implies, this implies, you can see, if we take the orthogonal of this orthogonal, then we will have range of t orthogonal will be equals to null space of t orthogonal, and this will imply that range of t is similar to the range of t, और उसका अगर हम डबल ऑर्थोगोनल ले रहे हैं then this will be equals to the
range of T, and it will be equals to the orthogonal complement of null space of C. So you can see this is our second condition. So in case of finite dimensional inner product space, this condition implies the second one. तो हमें और conversely or this range space of T orthogonal is equal to null space of T orthogonal if and only if not orthogonal. This is simply null space. Then if and only if the range space of T is equal to the null space of T orthogonal. So in case of finite dimensional inner product space, we need to justify the first condition only. We don't bother with the second condition. But in case of infinite, we need to prove both of these conditions. Okay. So in case of infinite dimensional inner product space, we need to verify both equalities. ओके और एक आपको रिजल्ट और पता होगा शायद दैट इफ वी हैव अ रिजल्ट दैट इज अगर W कोई भी सब स्पेस है V का, ठीक है, तो W कॉम्प्लीमेंट दिस ऑलवेज कंटेन्स द सब स्पेस W इटसेल्फ, ठीक है. दिस इज ऑलवेज ट्रू for any kind of vector inner product space V. In case of infinite ये तो होता ही है और finite के केस में ये इक्वल हो जाता है, ठीक है. तो उस केस में भी ये रिजल्ट तो ट्रू ही है, ठीक है. when V is any dimensional vector space inner product space. Okay, so this is important conclusion. Now वी हैव अ इम्पोर्टेंट डिस्कशन कि हमारे पास एक तो प्रोजेक्शन है और दूसरा ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन है. तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे इनके कंसेप्ट को. सो लेट मी टेल यू दिस कंसेप्ट ज्योमेट्रिकली. सो आवर नेक्स्ट हेडिंग विल बी द डिफरेंस बिटवीन ऑर्थोगोनल projection and let me write the word here ordinary. Okay, ordinary projection or those projections which are not orthogonal. ओके तो हम देखते हैं कि ये किस तरीके से दोनों आपस में अलग हैं. नाउ टू आइडेंटिफाई दिस डिफरेंस लेट मी कंसीडर सम एग्जाम्पल. सो कंसीडर द वेक्टर स्पेस V is R square and a subspace W that is the span of the set 1,1. ना यू कैन सी अगर 1,1 से स्पैन सेट है तो वो y इक्वल टू एक्स लाइन ही होगा आर स्क्वायर में दैट पासिंग थ्रू दी ओरिजिन. ओके नाउ फॉर दिस W and this R square we are going to define two linear operator. One of them will be orthogonal and one of them will be not orthogonal. फिर हम देखते हैं कि U और T किस तरीके से R स्क्वायर पर एक्ट करते हैं, ठीक है. सो लेट T and U be two linear operators on R square defined as we define that T of X is the defined as that T of V, that means the image of let me write it, it's defined as for any V in V.
if we identify the t image of that vector v, then this tv is the foot of a perpendicular from v on the line y equal to x और on w. ठीक है, y इक्वल टू x लाइन हो या फिर w सब स्पेस हो, दोनों बातें सेम ही है. एंड वी आर डिफाइनिंग u as that u of any a1 comma a2 that will be equals to a1 comma a1. Okay, now let me draw these two operators. So we are given with this scenario. Okay, so suppose this is r square. Okay, this is our w subspace, or you can say y equal to x line. Okay, w subspace or y equal to x line. ठीक है, now you can suppose a vector, that is, suppose this is our vector v. Okay, this is our v, not va1, this is v. Okay, now what is t? T is, if you take the perpendicular from this to this line, so we have this perpendicular here. Now whatever the perpendicular here, just identify the foot of this perpendicular. So let me call that this is the foot. Okay, whatever the point is, this is the foot of the perpendicular. And now this vector is our t of v. Okay, this is also some vector. So we have origin to tv, then tv to v, and then we have 0 to v. So we can apply the triangle inequality. So what about this red line? This red line will be v. Let me write from the red pin. This will be v minus t of v. Okay, I hope you understood this. So this is the t operator. What about this? If we have this v, हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाना है और उस परपेंडिकुलर का जो भी फुट बन रहा है, दैट फुट इज द t image of this v. Okay, now what about the u image of this v? Okay, so you can see if this is the v, then it has some coordinate like a1 comma a2. So this a1 is on x-axis, like this is our a1, and this a2 will be on y-axis. Suppose this is our a2. Okay, the coordinate will be 0 comma a2 and it will be a1 comma 0. Now the u ट्रांसफॉर्मेशन सेज कि यहाँ से जब हम v की u इमेज आइडेंटिफाई करेंगे, सो इट विल बी a हियर, क्योंकि लाइन ही y इक्वल टू x लाइन है, तो यहाँ पर हमें इसकी u इमेज मिलेगी. दिस इज u ऑफ v एंड दिस वेक्टर डिनोट्स द वेक्टर uv. ओके, नाउ यू कैन सी फॉर दिस वेक्टर v, दिस t of v construct a orthogonal line here, you can see. ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, इस v के लिए दिस tv इज ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑन w. यू कैन सी दैट, क्योंकि ये जो लाइन है वो ऑर्थोगोनल है. बट इफ यू कुड सी देन दिस लाइन, लेट मी ड्रॉ. ओके, दिस लाइन, सो यू कैन सी दिस लाइन. नाउ दिस एंगल इज नॉट पाई बाई 2. सो ये जो प्रोजेक्शन है v का, हम w पे देख पा रहे हैं इन फॉर्म ऑफ u v. दिस इज नॉट ऑर्थोगोनल, सो दिस इज जस्ट प्रोजेक्शन एंड दिस t इज एन ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन. ओके, सो आई कैन राइट कि यहाँ पर ये जो t है वो ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और u जो है वो एक प्रोजेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है. लेट मी टेल यू कि अगर कोई और हमारे पास वेक्टर्स होते तो उनकी टी और यू इमेज क्या आती. सपोज हमारे पास एक वेक्टर यहाँ पर है, ठीक है. नाउ दिस वेक्टर हैज सम a1 एंड सम a2 ऑन y एक्सिस, राइट. नाउ इफ यू सी,
अगर हम इसकी टी इमेज आइडेंटिफाई करेंगे तो सबसे पहले हम एक परपेंडिकुलर बनाएंगे यहाँ पर. सो विल आइडेंटिफाई ए परपेंडिकुलर. सो यहाँ पर ये हमारे पास वेक्टर था. दिस वेक्टर इज, suppose this vector is some w. Okay, this vector is some w. So we will identify a perpendicular here. Now this whatever the vector is here, this represent the vector t of v. Okay, so let me draw a line on this line. Whatever the vector is it, this is our t of, say this is w. Okay, this is w. ठीक है. Now what about the u image of this? So you can see on x-axis this is our a, and if you draw a line then this will be cut at this point, right, at this point. So u image will be this complete vector till this point. So if you add this point to this one, then this vector, this green vector is u of w. ठीक है. So this is how you can identify the t and u image of any vector in this r square plane. ठीक है. Now I hope you understood कि t एक ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और v एक प्रोजेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है. So from the figure we have this one. Okay, t is orthogonal projection of r square on w. Okay, and u is a projection, and we are sure that this is not orthogonal. Okay, now in the figure see, जब भी मैं यहाँ से कोई एक वेक्टर चूज करूँगा तो जब भी आप इस वेक्टर से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर बनाएंगे तो ये जो भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस वेक्टर, दिस विल बी इन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ w. ओके, आप इस लाइन पर जो भी परपेंडिकुलर बनाएंगे वो परपेंडिकुलर किसी ना किसी वेक्टर को तो रिप्रेजेंट कर ही रहे हैं और उन्हीं वेक्टर को हम बोलेंगे कि वो w ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स हैं. सो कैन आई से दिस v माइनस टी डब्ल्यू, क्योंकि ये परपेंडिकुलर ही है और ये किससे रिप्रेजेंट होगा, v माइनस टी डब्ल्यू से. सो कैन आई से दिस v माइनस टी ऑफ v is an element of w complement. Okay, likewise can we conclude the same statement for the v minus uw also? The answer is no. Okay, so this is a very important conclusion for an orthogonal and the normal projection. Okay, further you can see first is that v minus t of v, this vector is always in the complement, orthogonal complement of w, but this v minus u of v is never is in w complement. Okay, so this is the major difference between an orthogonal projection and the normal projection. Okay, so whenever t is orthogonal, then v minus t of v is in the orthogonal complement. If u is not orthogonal, then this will be not an element of w complement. Okay, so now I hope you understood the difference between the orthogonal projection and an ordinary projection. Let me tell you one more thing about this projection. तो जब कभी भी हम किसी वेक्टर की ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन इमेज देखते हैं तो यू कैन सी, अगर आप यहाँ पर कोई वेक्टर लेंगे, आप यहाँ पर कोई वेक्टर लेंगे, सभी वेक्टर्स में से जो सबसे क्लोज वेक्टर है इस v1 के, दैट इज दिस t of v. सो यू कैन से ऑन दिस w, this tv is the better approximation to this v, right? This is the closest one. So if t is orthogonal, then tv is the you can say closest vector to the v.
ओके, अब ये क्लोजेस्ट वेक्टर है v के, इसका मतलब हम किन्हीं भी दो वेक्टर्स की डिस्टेंस अगर इन्हीं कि किन्हीं भी वेक्टर ले, यहाँ पर कोई भी वेक्टर ले w से, उसका अगर हम v से डिस्टेंस आइडेंटिफाई करें, दैट डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर एंड इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन tv एंड v. Okay, so this is the another observation. It says that t of v in w is the closest vector to v. That is, we have that distance or the length of this vector v minus t of v is always less than equals to the norm of v and any element in the w. Okay, for all w in the सबस्पेस w, तो w से कोई सा भी एलिमेंट लेंगे उसकी डिस्टेंस हमेशा इन दोनों की डिस्टेंस से ज़्यादा ही रहेगी. सो यू कैन से इन केस ऑफ ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन फॉर v, t of v is the closest element. Okay, so this is the you can say type of difference between the orthogonal projection and the ordinary projection which are not orthogonal. ठीक है.